Yeah. So yes, good evening, everyone. This is Dr. G, and today I will continue with the abdomen anatomy part two. Yesterday, beta, I have just discussed the boundaries of the abdomen. Okay. Yes, I have yesterday discussed the boundaries of the abdomen. Yes. Good evening, guys. Ahmed Alfaq, good evening, beta. Ahmed Abukar, good evening. Yesterday, I have discussed the boundaries of the abdomen, guys. Yeah, I have discussed certain basic points that I wanted you to learn before the actual anatomy of the abdomen, right? And after that, I have discussed the horizontal planes. All the horizontal planes are important because every time they are being asked in the exam. Dimple D, Garima, Sai Krishna, beta, good evening, beta. Just trust me, if you're sacrificing your time to know, learn something over here, like this will be a fruitful session for everyone over here. Yes, this will be a fruitful session for everyone over here. So yeah, I have discussed all the planes. I have discussed the quadrants of the abdominal cavity. I have discussed the regions of the abdominal cavity. I have discussed regarding the umbilicus, the definition of the umbilicus, the position of the umbilicus, the nerve supply of the umbilicus, and I was discussing the anatomical importance. So I was on the fifth point and I was drawing a diagram, guys. I was drawing a diagram and I've just shown you the contents of the the what we say umbilical cord, the contents of the umbilical cord. And guys, you are very well aware that I have already told you we have the left umbilical vein, right? We have the two twisted umbilical arteries, okay? The two twisted umbilical arteries, the right and the left umbilical artery. Apart from that, we have the vitello intestinal duct and the allantois part of the hind cut Piyush Chaudhary, good evening. Abhi Gandhi, good evening. Good evening. I hope, guys, the audio, visuals, everything is visible. Everything is visible. Taylor. Okay, okay, perfect. I hope I'm useful to you in a certain way, guys. So yes. Now, guys, over here, Tanvi, good evening. मेरा फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में कि ऑडियो विजुअल सब कुछ फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तुम लोग बिल्कुल यू आर रेडी विद योर नोटबुक्स पेन पेंसिल एंड एवरीथिंग, so you are like perfectly fine with your end. So now, guys, remember that remember Garima says okay, okay, sir, we are like all okay. Okay, now I have to discuss one situation. Part one beta summarity, it is already like uploaded yesterday, so you can just check on the live section of this particular channel, you will get it over there. So without wasting much more time, beta, if now vitellar intestinal duct, okay, let me know encircle one portion over here, and the entire portion over here. So I have taken three areas of the vitello-intestinal duct. Okay, so point A, point B, and the last hole, that is point C. I have taken 3 points, guys, A, B, and C. Now, guys, A point, it is actually the proximal part. बेटा proximal होगा क्योंकि body में पहले आ रहा है. It is the proximal part of the vitello-intestinal duct. It is the proximal part of the vitello-intestinal duct. Okay. B, I can see B, it is the middle part. Okay, B, it is the middle part. I've just see the circle. Yes, B, it is the middle part of. Okay, B, it is the middle part of vitello-intestinal duct. And the C, basically it is the remaining part of it is the remaining part, okay, the remaining part of VID, vitello intestinal duct. ये जानना बहुत जरूरी है यहाँ पे. It is very essential to know all this over here. So guys, if the proximal part of the VID, okay, if the proximal part, okay, let me just write the statement. Yeah, if the proximal part of the VID, that is the vitello-intestinal duct, if it persists, beta, अगर ये persist करता है after birth, okay, if it is
persisting after birth. So it will give rise to a clinical condition that is called as the Meckel's diverticulum. Okay, it will give rise to a clinical condition and it is called as the Meckel's diverticulum. I will be discussing the Meckel's diverticulum in detail because it is an important topic from the surgery point of view. Okay, it is what is Meckel's diverticulum, guys? It is the persistence of the proximal part of the vitello-intestinal duct. Okay, it is the persistence of the proximal part of the vitello-intestinal duct. Apart from that, guys, if we see that if the middle part is persistent, okay, then it will give rise to enterocele. Okay, it will give rise to enterocele. Okay, if the middle part is persisting, it will give rise to enterocele. And if the remaining part, okay, if it is persisting, it will give rise to overall persistence of this vitello-intestinal duct. Okay, the remaining part or the overall persistence of this particular duct will give rise to a condition that is called as the cherry red tumor. That is called as the cherry red tumor. Shiv, good evening. Cherry red tumor. ओके, तो ये तीन कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए कि अगर प्रॉक्सिमल पार्ट परसिस्ट करेगा तो वी हैव द मेकल्स डाइवर्टिकुलम, मिडल वाला करेगा तो एंटेरोसील एंड द रिमेनिंग पोर्शन और आई कैन से इवन द होल persistence of the vitello-intestinal duct will give rise to a tumor and that is called as the cherry red tumor. तो एक तो ये तीन conditions हो गई, ये तीन clinical conditions जो इस anatomical portion से related है. Apart from that, guys, अगर पूरा का पूरा it can also give rise to what we say fecal fistula also, right? Okay. इतना क्लियर है सब लोगों को? ने इतना लिख लिया है? ये तीनों पॉइंट्स नोट्स में डालनी है कल वाले डायग्राम में. ओके, सो यस, तो पहले एक छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं मेकल्स डाइवर्टिकुलम का, राइट? आई जस्ट वांट टू इनकॉर्पोरेट दिस टॉपिक और फिर एक डायग्राम और डिस्कस करूंगा मैं लोगों से. तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दैट इज द मेकल्स डाइवर्टिकुलम. और ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा इसमें, तो सीधा सा इसके दो चार पॉइंट्स है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You have to just mention it in your notes. Okay, the Meckel's diverticulum. Okay, the Meckel's diverticulum. I hope the screen is visible. Everything is like perfectly going on. There is no hatch today. Sure. Good evening. So remember, guys, the very first point, it is, you already know, it is the remnant of the vitello-intestinal duct. Okay, or I can say the proximal part of the vitello-intestinal duct. The proximal part of the vitello-intestinal duct. Apart from that, guys, remember that this particular Meckel's diverticulum has independent blood supply. It has independent blood supply. It has independent blood supply. Apart from that, guys, remember that it follows a rule, and that rule, it is called as the rule of two. Okay, it is called as the rule of two. Rule of two. So remember, guys, that it is 2 inches long. Okay, it is 2 inches long. Okay, it is seen in 2% of population. It is seen in nearly about 2% of the population. Okay, it is seen in nearly 2% of the population. It is 2 feet. The location, beta, it is 2 feet proximal to. It is 2 feet proximal to ileocecal junction. It is 2 feet proximal to ileocecal junction. Okay. Now, in that case, the 20% patients, okay, the 20% patients can have ectopic mucosa. Ectopic mucosa. Okay.
एक्टॉपिक का मतलब होता है बेटा अनयूजुअल, ओके, अनयूजुअल, जो एक्चुअली उसकी नॉर्मल जगह नहीं है फिर भी प्रेजेंट है, ओके, डार्क म्यूकोसा। एंड यू विल आस्क मी कि सर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एक्टॉपिक म्यूकोसा, what is the most common ectopic mucosa? And remember guys, it is the gastric mucosa that is most common. It is the gastric mucosa that is the most common one. Okay. Now second most common, remember, this is again a question. The second most common mucosa, it is pancreatic mucosa. Okay. It is pancreatic mucosa. Okay. Pancreatic mucosa. Initially guys, okay, see, Meckel's is having no as such complaints, but it is an incidental finding. Now, if it is an incidental finding, guys, now what is actually to be done if you, while doing some other surgery, and if you recognize that no, there is something which is like the Meckel's diverticulum is there. So, if the Meckel's diverticulum has a broad mouth, okay, so you have to just leave it, okay, you just have to leave it. And if there is very small mouth, remember it is having a narrow mouth, or I can say a narrow base, then you will cut it. And anything which you cut it, it is called Tommy, okay, diverticular, okay, diverticulectomy. Okay, what you will do? Diverticulectomy. So you can see that incidentally detected Meckels. So it can present in two ways, guys. It can present in two ways. If it is having a wide mouth का मतलब है it is having a broad base. So you have to do nothing. You just have to leave. छोड़ दो उसको वहीं पे उसके हालातों पर. और दूसरा है if it is having a narrow mouth, or I can simply say a narrow base, okay, a narrow base, then you have to cut it, and that anything which you cut it is called as diverticulectomy. Okay, diverticulum है ना, तो उसको काट दो, तो टॉमी लगा दो, diverticulectomy. Okay, so that is about a little bit about the surgical integration, that is the Meckel's diverticulum that I have discussed with you people. I hope this is clear to everyone. फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम और बनाएंगे. फटाफट से थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में. सो एंड देन विल ड्रॉ वन मोर डायग्राम. या चल ठीक है. एंजल मैथ्यूज, जेसिता, डिम्पल दी, गरिमा, मनीष, फनमोट, क्रिस्मा, अभी गांधी, तनुप्रिया, साई कृष्णा, वेरी गुड गाइस. ओके ओके ओके, चलो ओके ओके परफेक्ट है. नाउ someone is texting me while I'm teaching you guys over here. Any student was texting me कि sir I want to buy some subscription, can you just tell me, मतलब when I'm teaching you free of cost and then you don't want to study and no searching for other resources, then I mean what to say about the mental level of that person, I don't know. Anyways guys, see guys, if it is a urinary bladder guys, now I want to discuss a little bit about this all. Urinary bladder, okay, I'm not drawn it complete, let me just draw it complete after labeling. Okay, the urinary bladder. And remember guys, if suppose this is the umbilicus, okay, this is your प्यारा umbilicus जिसको हम लोग नाभि भी बोलते हैं, umbilicus, and this umbilicus is attached to the urinary bladder, okay, the apex of the urinary bladder, with the help of a ligament, and that ligament, it is called as the median umbilical ligament. I've already told you, median umbilical ligament. Okay, अब मुझे बात बताइए, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो है, इट इज परसिस्टेंस ऑफ व्हाट, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, इट इज परसिस्टेंस ऑफ व्हाट, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, it is persistence of what, check. So ये median umbilical ligament हो गया बेटा. Now this umbilical ligament, it extends from
इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, यस, और इसमें और भी पॉइंट्स है, और बोलो। हम्म। तो ठीक है। हम्म। यस, यूरैकस है। तो इट इज द परसिस्टेंस ऑफ एलन एलेंटोइस। हाँ, ठीक है मनीष राज, वेरी गुड। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपेक्स ऑफ urinary bladder. Okay, it extends from the apex of the urinary bladder to the umbilicus, to the umbilicus. मैंने आप लोगों को कल भी बताया था डायग्राम में, और यहाँ पे अगर चाहो तो मैं दोबारा भी बता देता हूँ बेटा। एलेंटोइस जो है बेटा, अगर ये ऑब्लिटरेट हो जाए एंड इट विल गिव राइज टू यूरैकस, एंड दैट इज नथिंग बट योर द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। और ये जो अम्बिलिकल लिगामेंट है, ओके, एलेंटोइस के बाद जो बचा हुआ ये लिगामेंट जो है, इट इज बेसिकली कनेक्टिंग द upper aspect, I mean the apex of the urinary bladder to the umbilicus. Okay, apex of the urinary bladder to the umbilicus. नाउ मीडियन है बेटा, याद रखना, बिल्कुल मिड लाइन में जो होता है ना, मीडियन है ये, मीडियल नहीं है, मीडियन है। ठीक है, नाउ गाइस रिमेंबर, ओके, वी हैव द टू umbilicus, okay, which are surrounding, okay, which are surrounding this median umbilical ligament, and these two umbilicus, I mean, sorry, these two ligaments are called as the medial umbilical ligament. Okay, these two are called as the medial umbilical ligament. Okay, so if I ask you guys, if I ask you in the chat box, just try to tell me how many median umbilical ligament we have and how many medial umbilical ligament we have, and why. Medial umbilical ligament क्यों है दो हमारे पास? Why? What is remnant? Okay, remnant जो है medial umbilical ligament किसका है? Tell me that also. Tell me that also. यस, टू मीडियल है तनुप्रिया, वेरी गुड बेटा। दो है, टू मीडियल एंड वन मीडियन, वेरी गुड तनुप्रिया। टेम्पल डी और आर अटेंडिंग द लेक्चर्स, एंड व्हाट्स द रीजन? मतलब ये किस चीज का रेमिनेंट है? मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। ओके, yeah, everyone is right. Fun mode डाला जैसे था, everyone is right. So remember guys, if it is like patent, or I can say if it is open, okay, then it can give rise to something which is called as the urinary fistula. ये सब सर्जरी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूरिनरी फिस्चुला। ओके, मतलब यूरिन जो है वो किससे लीक करने लग जाएगा? इस लेगामेंट से थ्रू, मतलब अम्बिलिकस के थ्रू बाहर लीक करने लग जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, सो ऐसा नजर आएगा दैट द अम्बिलिकस इज क्राइंग, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द वीपिंग अम्बिलिकल कॉर्ड। यस, yes, it is also called as the weeping umbilical cord. It is also called as the weeping umbilical cord or the crying umbilical cord. Some amount of the urine will be like dribbling out of the umbilicus, okay, because of this persistence. If you just want now beta in this particular image, पहले तो ये image देखो कैसे ली गई है। I have just taken my anterior abdominal wall out and I'm just looking it at from the back side. मैं पीछे से देख रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपनी anterior abdominal wall ऐसे बाहर निकाली and I'm just trying to look at this particular the anterior abdominal wall. So if you can just see beta कि पीछे की तरफ this particular part, it is the umbilicus, okay, and median umbilical ligament बेटा अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, this median umbilical ligament, it is connecting the apex of the bladder. ये हमारा bladder, okay, you can easily see that the median umbilical ligament, it is connecting the apex of the bladder to the umbilicus, right, median umbilical ligament. और उसके साथ में अगर ट्रेस करोगे बेटा, उसके साथ में अगर ट्रेस करोगे तो you will find the medial umbilical ligament, right? So I hope this picture is also clear. और ये अभी आया भी था शायद एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। ये लिगामेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट नीट पीजी 2023 में क्वेश्चन आया है इससे। तो यू कैन नॉट डिटेक्ट, अम्बिलिकस से ही क्वेश्चन पूछना था पूरे एब्डोमेन में, उन्होंने लिगामेंट से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया।
ठीक है। सो आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग, और उसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या था वो भी डिस्कस कर लिया, और एक तो पूरा इंटायर डिटेल में डिस्कस किया, दैट इज द मेकल्स डाइवर्टिकुलम, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस पिक्चर इज वेरी मच क्लियर, राइट। Now put the next heading, guys. एक thumbs up भी दे देना that you all have written it, and put the next heading, guys. The layers of the anterior abdominal wall. The layers of the anterior abdominal wall. Okay. The layers of the anterior abdominal wall. चलिए, नीट पीजी में क्वेश्चन आया था, जो चीज आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा स्टार्ट कर दो। तो आप लोगों को सबसे पहली बात पता है कि वी हैव द वेरी फर्स्ट लेयर दैट इज कॉल्ड एज द स्किन। ओके, वी हैव द स्किन, द वेरी फर्स्ट लेयर। Total we have 8 layers. Total we have 8 layers of the anterior abdominal wall. Total we have 8 layers of the anterior abdominal wall. Yes, Tanu, Angel, Garima, Dimple, Manish, Krisma, Saila. Very good, guys. The first layer, it is the skin. पहली लेयर क्या होती है? आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट स्किन क्या है? आई मीन लेयर क्या है? दैट इज द स्किन ओनली बेटा, राइट। द नेक्स्ट लेयर, इट इज द सुपरफिशियल फेशिया. It is the superficial fascia. Now, when I say superficial fascia, guys, this superficial fascia, or you can see that it is a fatty layer. It is composed of adipocytes, the yellow colored layer. Beta. I hope everyone can see in this picture, right? So this superficial fascia, it is divided into 2 layers, right? It is divided into 2 layers. Okay, we have the Camper's fascia. Okay, we have the Camper's fascia. Okay, and we have the Scarpa's fascia. Scarpa's fascia. ओके, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, बेसिक रूल याद रखा करो ना, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। अब मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, my question to you people is, you tell me, deep fascia is present in the anterior abdominal wall, yes or no, and why? Deep fascia is present or not? Okay, and if it is present, like, if it is present or not present, and what's the reason? So remember, guys, that the Camper's fascia, no. Tanupriya says no, and what is the reason, beta? Now this Camper's fascia, it is a fatty layer. It is a fatty layer, and in the scrotum, it continues as dartos muscle. It continues as the dartos muscles. Scrotum में एक muscle देखने को मिलती है, and that muscle is actually the composition over here. It is the Camper's fascia only. It is continuing like that only. और अगर Scarpa's fascia की बात की जाए, तो remember that, guys, it is a membranous fascia. Okay, it is a membranous layer, and it continues as the Colles fascia. Okay, it continues as the Colles fascia. Reason नहीं बताया तुमने तनु, reason बताओ. Colles fascia, it continues as Colles fascia. Okay, रीजन बेटा देखो, अगर डीप फेशिया प्रेजेंट होगा, चलो लेट अस एज्यूम, अगर डीप फेशिया प्रेजेंट होगा, तो एब्डोमिनल वॉल एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगी। डीप फेशिया तो बिल्कुल रिजिड हो गया, फाइब्रस हो गया ना, तो ओबेसिटी जैसी चीज ही नहीं हो पाएगी, एब्डोमिनल वॉल एक्सपैंड ही नहीं कर पाएगा, तो देयर इज नो डीप फेशिया प्रेजेंट इन द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके, एसाइड्स आप सुनते हो, ओबेसिटी सुनते हो, ये सब होंगी नहीं फिर, अगर क्या कहते हैं, सबके 6 पैक्स होंगे फिर तो। So yeah, there is no deep fascia present, right? So we have the superficial fascia divided into Camper's fascia and Scarpa's fascia, right? Camper's fascia, basically it is the fatty layer, and in scrotum it continues as the dartos muscle. The Scarpa's fascia, it is a membranous layer, and it is like continuing as the Colles fascia, right? चलो, हाँ, अब समझ में आ गया। चलो, अब समझ में आ गया ना, तो ठीक है, अब समझ में आ गया है, तो फिर आगे से थर्ड पॉइंट देखो इसमें बेटा। चल ठीक है, थर्ड आप लोगों को रखना है। ओके, हम्म, एक और क्या कहते हैं, डीप फेशिया एक और जगह पे नहीं होती तनुप्रिया। इफ यू वांट टू आंसर, यू कैन जस्ट आंसर मी कि डीप फेशिया इट इज नॉट प्रेजेंट एट वन मोर लेयर ऑल्सो। तो थर्ड लेयर लिखेंगे हम लोग, ये सुपरफिशियल फेशिया मत लिखना।
तो थर्ड लेयर आप लोग लिखिए, वी हैव द एक्सटर्नल oblique muscle. We have the external oblique muscle. चलो बता दो कौन सा होगा नेक्स्ट वाला, अगली मसल कौन सी होगी? वी हैव द इंटरनल oblique muscle. इंटरनल oblique muscle. बेटा ये नहीं है आंसर। वी अगर फेस की बात करें ना, स्पेशली द फेस आल्सो डजंट कंटेन्स एनी डीप फेशिया इन आवर बॉडी, इवन दो like a small part of the face, if I say like what we say the parotid glands beta, उसके अलावा parotid gland पे we have the like covering of the deep fascia, like it is having, but the entire face is not having that deep fascia also. Okay, so yeah, so we have the fifth one, it is the transverse abdominis muscle. Transverse abdominis muscle. Okay, then we have fascia transversalis. Fascia transversalis. Then we have the extra peritoneal connective tissue. Extra peritoneal connective tissue. And at last, we have a layer of parietal peritoneum. Yes, very good, Tanupriya. Very good, Tanupriya. Yes. And at last, we have a layer of the parietal peritoneum. Right? So in total, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, what are the layers of the anterior abdominal wall? तो मेरे साथ आप लोग याद करिए, we have the skin, superficial fascia, deep fascia present नहीं होता, there is no deep fascia. Superficial fascia is divided into two layers. Okay, we have the outer campus fascia, which is composed of the fatty layer. Okay, और यही campus fascia it continues in the scrotum as dartos muscle. If we talk about the scarpa's fascia beta, it is a membranous layer. Okay, and it continues as polys fascia. Okay, in the lower part. Apart from that, we have the external oblique muscle, internal oblique muscle, transverse abdominis muscle. मैंने आप लोगों को anterior lateral एब्डोमिनल वॉल के ऊपर क्वेश्चन आता है, बार बार वाइवा में भी पूछा जाता है, व्हाट आर द मसल्स ओके ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और इन मसल्स को वी विल डिस्कस इन डिटेल, ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन सब बताऊंगा, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. Then we have a simple fascia, that is the fascia transversalis. इस बार पीछे में क्वेश्चन आया था, we'll discuss it. Extra peritoneal connective tissue and the parietal peritoneum, that is the last layer. That is the last layer. Okay, so again the layers we have discussed, we will discuss the muscle part in detail. Okay, we'll discuss the muscle part in detail, और peritoneum तो मैं अलग से कराऊंगा ही कराऊंगा, तो there is nothing to worry about. Okay, so before the muscles, let us discuss the arterial supply of the एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. अगेन गाइस, अब हम वॉल की ही बात करें, अभी मैं कैविटी में गया नहीं हूं, आई हैव नॉट गॉट इन, आई हैव नॉट लाइक इनसाइड द कैविटी, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी ऑर्गन्स राइट नाउ, द विसरल ऑर्गन्स, स्टमक, लिवर, पेनक्रियास, आई एम नॉट going in that detail. I'm just talking about the wall that is like, okay, the anterior abdominal wall, the wall which is in front. Okay, I'm not talking about the cavity, I'm just talking about the wall. So my question is, guys, let us like discuss from the बेसिक्स से डिस्कस करते हैं. मैंने स्टूडेंट्स को हमेशा बताया है कि every time whenever I am discussing this, what we say, the arterial supply, बेटा सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए. आपको पता है कि इन आवर हार्ट वी हैव लाइक 4 चैम्बर्स. मैं हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, नो मैटर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट यू विल हैव लाइक अ क्लियर पिक्चर कि सर कैसे कैसे आर्टरीज आ रही हैं एंड हाउ आर दे सप्लाइंग, so you already know that we have the left atrium. Okay, we have the left atrium, we have the left ventricle, and from the left ventricle we have something that is called as the aorta, or this is forming an arch. ये एक arch बना रहा है बेटा, ये एक arch बना रहा है, तो इसको arch of aorta भी बोलते हैं.
आयोटा द मेन आर्टरी, द इलास्टिक आर्टरी। मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में which is the valve that is present between the left atrium and the left ventricle? इसका आंसर भी फटाफट से बता दो, which is the valve that is present between the left atrium and the left ventricle? चल, अब मैं बिल्कुल आयोटा से स्टार्ट करता हूं। मैंने हमेशा बोला है कि मेरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सर कैसे आ रहा है। अब तुम लोगों को पता है कि आयोटा से 3 branches are coming out, 3 branches from the aorta are coming out. Okay. Yes, mitral valve. Very good, guys. मिस्री, नितिका, मनीष, फनमोद, गरिमा, एंजल मैथ्यूज। बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, बाइकस्पिड, क्योंकि जब ऊपर से देखते हो तो 2 कस्प नजर आते हैं, 2 ओपनिंग जैसे नजर आते हैं। राइट, चलो उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेटा अब आप मुझे ये बताइए, आयोटा के 3 ब्रांचेस होते हैं बेटा, फटाफट से बता दो कौन कौन से ब्रांचेस होंगे। ये वाला ब्रांच का नाम क्या होगा? चलो इसको ना रेड से बनाते हैं सो दैट इट लुक्स वे नाइसर। तो ये तो मुझे सिर्फ तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। इट हैज नथिंग टू ड्रॉ डील विद लाइक ओवर दिस पिक्चर। इसमें से मैं बताऊंगा। 3 ब्रांचेस के नाम बता दो बेटा। ओके, तनुप्रिया से ब्रेकियोसिफेलिक। वेरी गुड बेटा। तो एक हो जाती है ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। जिसको नहीं आता बेटा सीखो, सीखो अभी सीखो मेरे साथ। ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। और बेटा याद रखना ये मैं राइट साइड पे बना रहा हूं और ये 2 ब्रांचेस बनेंगी लेफ्ट साइड पे। ये 2 ब्रांचेस बनेंगी लेफ्ट साइड पे। राइट, ये 2 ब्रांचेस बनेंगी लेफ्ट साइड पे। तो ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक राइट साइड पे है और ये जो 2 ब्रांचेस है बेटा, तो एक को मैं ए मार्क कर देता हूं और एक को मैं बी मार्क कर देता हूं। तो ए बेसिकली स्टैंड्स फॉर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यस, यस। और दूसरा बिल्कुल सब बिल्कुल सही है, एवरीवन इज राइट। एंड द बी पार्ट बेटा, इट इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इट इज द लेफ्ट subclavian artery. It is the left subclavian artery. अब brachiocephalic trunk will again divide beta. This brachiocephalic trunk will again divide into 2 branches. Okay, let it mark it as C and D. Let me mark this as C and D. Yes, तो बेटा C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, देखो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी था, अब क्या हो जाएगा? राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एंड डी इट विल बी, या इट विल बी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, वाइस वर्सा, जैसे भी ये ऊपर सबक्लेवियन होना चाहिए था, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, राइट सबक्लेवियन कुछ भी मार्क कर लो, मतलब बाइफर्केट करती है। ओके, नाउ गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई। तो सपोज शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो सबक्लेवियन आर्टरी आई कैन सिंपली राइट SCA। ठीक है, और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक BCT लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये चीज सबको क्लियर हो गई। इतना क्लियर है, फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज क्लियर। इतना तक हमें क्लियर हो गया है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच कहां से आ रही है। तो ये क्लियर हो गया है बेटा, तो आई एम जस्ट इरेजिंग इट। हाँ, आई एम जस्ट इरेजिंग इट, जस्ट आई वांट टू शो यू। हाँ ठीक है, सब डिम्पल डी सब लोग सही बोल रहे हैं। मनीष, पनमोट, तनु, एंजल, रंजीत, दारा, जैसिता, गरिमा, तन्वी, एवरीवन इज सेइंग यस, यू आर लाइक ऑसम गाइस। तो अब हम अपनी पिक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट बना लेते हैं ताकि मुझे पूरा पेज मिल जाए आपको समझाने के लिए। ठीक है, पूरा पेज मिल जाए। सो यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव दिस, so you already know we have this left atrium. From the left atrium we have something which is called as the left ventricle coming out, right?
and this is right. This is the aorta wala part, or इसी aorta से you have three main branches, right? You have the brachiocephalic trunk, the okay, we have the left common carotid artery. Just a line diagram, guys. Nothing special I'm drawing. And left subclavian artery. So this brachiocephalic trunk also divides into. We have the right common carotid artery and the right subclavian artery. So brachiocephalic trunk ही हो क्या, और it is again bifurcating. So what is the difference, guys? What is the difference? आपको ये पता होना चाहिए कि right subclavian artery, it is not a direct branch of aorta. It is coming from the brachiocephalic trunk. If I compare it with the left subclavian artery, it is a direct branch of arch of aorta. It is a direct branch of arch of aorta. अब इसी में अगर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लो, इसी डायग्राम को थोड़ा सा और बढ़ा ले हम लोग, तो बेटा रिमेंबर कि ये जो आयोटा जा रहा है, तो ये आयोटा सबसे पहले जाएगा थोरैक्स रीजन में, ठीक है? तो इसी आयोटा का नाम हो जाता है थोरासिक आयोटा. इसी आयोटा का नाम हो जाएगा थोरासिक आयोटा, थोरैक्स वाले रीजन में, मतलब डायफ्राम से ऊपर ऊपर, जी पूरा रिब केज है, ठीक है? द इंटायर रिब केज अबव द डायफ्राम. ओके, तो ये थोरैक्स रीजन हो गया जिसमें लंग्स भी है, हार्ट भी, एवरीथिंग इज देयर. सो दिस आयोटा, ओके, विल बी टर्म्ड एज थोरासिक आयोटा. नाउ after crossing the level of diaphragm, okay, after crossing the level of diaphragm, अगर ये diaphragm है, अगर ये हमारा प्यारा diaphragm है, and after crossing the level of diaphragm, we call it as a very specific name, and that is called as the abdominal aorta, and it is called as the abdominal aorta. abdominal aorta. क्या ये पिक्चर क्लियर है सबको? फटाफट से एक बार थम्स अप में देके बता दो, क्या ये पिक्चर क्लियर है? सुरवीन, मनीष, रंजीत, तनु, वेरी गुड, वेरी गुड. अब अब बेटा देखो, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे डिस्कशन करना है. तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को ना सप्लाई बहुत जगह से आ रहा है, तो उस बहुत जगह को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ऊपर सप्लाई कहां से आ रहा है. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो अपर पार्ट है, इट इज गेटिंग सप्लाई फ्रॉम वेयर? इट इज गेटिंग सप्लाई फ्रॉम वेयर? सो यू ऑलरेडी नो गाइस. लेट अस सपोज दिस इज द sternum वाला पार्ट. Okay, this is the, okay, this is the, okay, I'll just draw it a little, will again become messy now. You already know that we have this sternum. sternum की कौन कौन से, sternum में कितने joints होते हैं फटाफट से बता दो. Just tell me in the chat box how many joints are there in the sternum. How many joints are there in the sternum, guys? Yes, two joints. Wonderful word, very good. Now beta, this sternum is attached to the costal cartilage, and we have these costal ribs, right? We have these costal ribs. Okay, whatever diagram I'm drawing, just to make you understand the entire picture, guys. हाँ, टू है. नाम भी बता दो फटाफट अगर नाम पता है तो. ओके, नाम भी पता है तो बता दो. I've just drawn a little small, guys. Otherwise, it should be like more. Okay, I'll just draw it a little big. Or I can draw one more over here. So I have drawn 7 ribs. I have drawn menupriosternal and xiphisternal. Very good. I have drawn these 7 ribs, guys, right? We have this first rib, second rib, third rib, fourth rib, fifth rib, sixth rib, and we have the seventh rib.
Now, remember guys that we have subclavian artery. Okay, we have subclavian artery, and subclavian artery has also three parts. Subclavian artery also has three parts: first part, second part, and third part. From the first part of the subclavian artery, and again a multiple number of times the question has been asked. From this subclavian artery, चाहे right subclavian हो चाहे left subclavian हो बेटा, from this subclavian artery a branch is coming, and can anyone tell me the name of this branch? Yes, Rishi, namaste, namaste beta. This branch, it is going through these intercostal spaces. Okay, it is passing through. Okay, it is passing, and in the sixth intercostal space. Okay, in the sixth intercostal space, it is divided into, yes, it is divided into two parts beta. Okay, it is divided into two parts in the sixth intercostal space. Okay, so yes, it is the internal thoracic artery. Very good beta, very good. तो ये तो मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि we have this. Okay, I'll just mark it with another color so that you doesn't assume it to be a branch. Okay, so yes, it is the internal thoracic artery. We have this internal thoracic artery. We have this internal thoracic artery. Now, this internal thoracic artery, beta, we have six. Okay, we have six intercostal space. This is the first. This is the second intercostal space. This is the third intercostal space, the fourth intercostal space, the fifth intercostal space, and at last we have the sixth intercostal space. So at the level of sixth intercostal space, this is again dividing into two branches. This is the sixth intercostal space. Inter means between the two ribs. Okay, between the two cartilage, between the two ribs, intercostal space. We have six intercostal space over here right now, and it is dividing it into, like, it is the place where this artery is divided into two branches. It is divided into two branches. One of the branch beta, it is called as the superior epigastric artery. It is called as the superior epigastric artery. Okay, and the other one, okay, which is supplying the diaphragm also, it is called as the musculophrenic artery. It is called as the musculophrenic artery, which is supplying the muscles of the diaphragm also. Phrenic का मतलब ही मेरा diaphragm वाला part हो गया ना. Phrenic का मतलब ही diaphragm वाला part हो गया. So you all are aware right now. If I ask you, superior epigastric artery, okay, it is a branch of internal thoracic artery. Internal thoracic artery coming from the first part of subclavian artery. Right subclavian artery, it is coming from the brachiocephalic trunk, aorta, left ventricle. Every time whenever I'm teaching you the blood supply, guys, I'm always asking you to move in a retrograde manner. कोई भी आर्टरी पकड़ लो और उसकी पाथ को ट्रेस करो, कहां से आया है वो. You should know. Left ventricle तक जाओ हर बार, so that you have a clear picture in your mind ki what is actually happening, right? So you should have a clear picture in your mind. If I ask you musculophrenic artery, it is a branch of internal thoracic artery. Internal thoracic artery is a branch of first part of subclavian artery. If it is a right subclavian artery, it is arising from the brachiocephalic trunk, and then from the aorta, and then from the left ventricle. If it is a left subclavian artery, then it is arising directly from the aorta. It is arising directly from the aorta. एक artery पकड़ो और उसका पूरा path trace करो left ventricle तक. Every time you have to like reach the left ventricle, guys. Okay, you have to reach the left ventricle. तभी तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में. तभी तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में, राइट? तो आई होप इतना क्लियर हो गया सब लोगों को. इतना क्लियर हो गया सब लोगों को. फटाफट से एक बार बता दो चैट बॉक्स में. हाँ, चल इतना क्लियर हो गया. तो इस पे अब फटाफट से हम लोग अब डायग्राम बनाते हैं उसका. ठीक है, हाँ. So
Now, if I ask you musculophrenic artery, it will supply the diaphragm also, right? It will supply the diaphragm also, the intercostal spaces also, and it will supply the anterior abdominal wall, and it will supply the anterior abdominal wall, right? So if I just want to show you guys now, if I just want to show you over here, only I will just draw the diagram. Just one more diagram and like the concepts will be crystal clear to you. Now guys, see over here. See over here. Let us suppose this is the xiphoid process. Now this is xiphoid process, and xiphoid process it is level at which vertebral level, guys? Xiphoid process is level at I mean it is at which vertebral level? Yes, प्रातु पवारा, हेलो बेटा. तो अब इस पर डायग्राम में देखते हैं बेटा, और आपको पता है कि we have the umbilicus situated in the between. We have the umbilicus situated in the between, and I've already told you about the two arteries. Yes, it is T9 dimple kriti. Very good. You are like attending the lecture, so you have a great idea. So you already know that this artery, the musculophrenic artery, I'm just drawing it over here. Yes, it is supplying the diaphragm, and along with the diaphragm, it is also supplying the upper anterior abdominal wall. It is also supplying the upper anterior abdominal wall. Okay, it is also supplying the upper anterior abdominal wall. And along with that, we have the name only suggests superior epigastric artery. Superior epigastric artery. Okay, I'll just draw a little above because यहाँ पे anastomose भी होता है. If you just remember, yeah, तो एक anastomosis यहाँ पे भी होता है. ठीक है. अब we already know this is the superior. तो अब सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को ना मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, दैट इज एसजीए. तो ये एसजीए यहाँ पे ऐसे लिख दिया है एसजीए. तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इट इज लाइक दिस, इफ यू कैन जस्ट सी इन द इमेज एज वेल. इट इज द सुपीरियर. ओके, एसजीए लिख दिया मैंने. बेटा मैं तो एब्डोमेन ही करा रहा हूँ, मैंने तो कभी अपर लिप कराया ही नहीं है यहाँ चैनल पे. तो yes, he will continue. Dr. Krishna is actually teaching. He will continue. So we have the superior epigastric artery. Okay, or yeah. Okay guys, so we have the superior gastric artery या epigastric artery. तो ये epigastric लिख लेना बेटा, इसको epigastric कर देना. And we have the musculophrenic artery. So we have the superior epigastric artery and we have the MPA, that is the musculophrenic artery. तो ये MPA मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. तो दो आर्टरीज के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कट पिक्चर दे दी है कि हाउ दे आर कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. नाउ बेटा वी हैव अ लिगामेंट. ओके, और वो लिगामेंट आप लोगों को पता है कि वी हैव अ लिगामेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंग्वाइनल लिगामेंट गाइस. ओके, वी हैव अ लिगामेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंग्वाइनल लिगामेंट. नाउ व्हेन आई से इंग्वाइनल लिगामेंट बेटा, तो इंग्वाइनल लिगामेंट इट इज अराइजिंग फ्रॉम वेयर. मैंने कल तुम्हें बेसिक्स में बताया था, अगर तुम्हें याद हो, हिप बोन का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है दैट इज द, कितने पार्ट्स होते हैं हिप बोन के तुम लोग को पता है? इलियम, इस्कियम और प्यूबिस. तो इलियम में मैंने आप लोग को बताया था वी हैव द इलियाक क्रेस्ट, और इलियाक क्रेस्ट के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन.
एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, राइट। और वहीं से स्टार्ट होती है एक लिगामेंट, वहीं से एक लिगामेंट स्टार्ट होती है बेटा, एंड दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस और द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। और उस लिगामेंट को हम लोग नाम देते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट, यस, उसी लिगामेंट को हम लोग नाम देते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, यू शुड नो दैट बेटा इट इज द इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट। तो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। बहुत खचपच हो जाएगा बट ठीक है, चलो लिख लेते हैं, नहीं तो फिर तुम कहोगे कि सर लिखने में काम चोरी कर रहे हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट, राइट। नाउ वी हैव एन आर्टरी बेटा, ओके, वी हैव एन आर्टरी। अब यहां ध्यान से देखना, एक ही आर्टरी बनाऊंगा, ओके। अ पार्ट, yes, a part above the inguinal ligament and a part below the inguinal ligament. Part above the inguinal ligament, this is called as the external iliac artery. It is called as the external iliac artery. And part below the inguinal ligament, it is called as the femoral artery. Femoral artery. Femoral artery. Femoral artery. Now, beta, my question is, external iliac artery is coming from where? External iliac artery कहां से आ रही है? External iliac artery कहां से आ रही है? अगर बेटा ध्यान से देखोगे, चलो मैंने इसलिए डायग्राम बनाया था, हाँ, कॉमन iliac artery से। अब देखो ये एब्डोमिनल आयोटा है ना, एब्डोमिनल आयोटा जहां पर एंड होता है, where the abdominal aorta end, because I don't have space, I'm not drawing it like large in size, where it ends, guys, this has two terminating branches, okay, this has two terminating branches, the right and the left, it like divides into two, ये बिल्कुल इस तरीके से डिवाइड होता है बेटा। If I just want to draw it over here, suppose this is the abdominal aorta, yes, common iliac artery, very good beta, we have the common iliac artery, एंड कॉमन इलियक आर्टरी बेटा बॉडी का राइट साइड ये है, वी हैव द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड वी हैव द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। तो एक हो जाएगा राइट कॉमन इलियक आर्टरी और एक हो जाएगा लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। So I'm just drawing on this side. Now each common iliac artery will again divide into two parts. Okay, we have the external iliac artery, okay, the left external iliac artery and the left internal iliac artery. Again right side पे भी यही होगा कि we have the right internal iliac artery and the right external iliac artery. So I hope ये पता चल रहा है कि external iliac artery कहाँ से आ रही है। I hope this is clear in your mind कि external iliac artery कहाँ से आ रही है। External iliac artery trace करो, सबसे बढ़िया इसको ट्रेस करो रेट्रोग्रेड मैनर में। इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट common iliac artery or right common iliac artery, which is resulting due to the bifurcation of which aorta? Abdominal aorta. Which is resulting due to the bifurcation of which aorta? Abdominal aorta. Abdominal aorta, thoracic aorta, aorta left ventricle. तो पता चल गया एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहां से आई। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बिलो द लेवल ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, okay, it is called as the femoral artery. Below the level of inguinal ligament, it is called as the femoral artery. क्या ये पिक्चर क्लियर है? इतना समझ में आ गया? पहले फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि ये समझ में आ गया कि एक्सटर्नल इलियक कहां से आई, फेमोरल कहां से आई। एपीए सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और मस्कुलोफ्रेनिक तो मैंने बता दिया है। Sudin says yes, Dr. Kriti says okay, yes, you understood. Tanupriya, okay, guys, perfect, guys, perfect. Sure. मनीष फनमोड, ओके गरिमा, वेरी गुड। अभी कांति बेटा रिप्लाई देते रहा करो, थोड़ा मुझे भी लगेगा कि व्हाटएवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस, मतलब वो फिट हो रहा है तुम्हारे पीनट साइज ब्रेन्स में, ठीक है। सो चल चल
नाउ बेटा रिमेंबर, एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी से एक ब्रांच आती है. ओके, देयर इज अ ब्रांच कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, and remember that this branch joins with the superior epigastric artery, anastomose करती है. Can anyone tell me the name of this branch? Can anyone tell me the name of this branch? बेटा ऊपर से superior epigastric artery आ रही है. So yes, Tanupriya, very good beta. It is the inferior epigastric artery. It is the inferior epigastric artery. Epigastric artery. Very good. IEA. और ये दोनों की दोनों anastomose कर रही हैं. Yes बेटा, very good. Very good. These both are like anastomosing. तो and these both are anastomosing at the level of umbilicus. और मैंने ये point भी लिखवाया था तुम लोगों को. Anterior abdominal wall, basically at the level of the umbilicus, two arteries are getting anastomosis, and that is superior epigastric and inferior epigastric. Now beta remember, yes, remember, from the femoral artery, from the femoral artery, another branch will come. Okay, from the femoral artery, another branch will come, and it will again supply. Okay, it will again supply the anterior abdominal wall, the muscles of the anterior abdominal wall, and this is called as, the superficial. Again guys, it is not superior, it is superficial. Be careful with the term. Superficial epigastric artery. It is supplying the muscles of, बेटा वो सुपर, ओके, वो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी थी और ये है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. ओके, इट इज द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. इट इज द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. हाँ, सर्कमफ्लेक्स मैं अभी बना रहा हूँ बेटा, मैं 1 मिनट दे दो. आई एम ड्राइंग दैट आल्सो. ओके, आई एम ड्राइंग दैट आल्सो. तुम अगर कह रहे हो फन मोड तो वो भी मैं बना देता हूँ. So there is one more artery coming from the femoral part. Okay, there is one more artery coming from the femoral part. Okay, and it is also supplying the anterior abdominal wall. It is also supplying the anterior abdominal wall, and it is called as super circumflex iliac artery. It is also called as superficial circumflex iliac artery. Iliac artery. तो गाइस अगर तुम बोलोगे नंबरिंग कर दो, अभी तक हमने कितनी बना दी है, तो रिमेंबर गाइस, वी हैव ड्रॉन, ओके, वी हैव ड्रॉन द musculophrenic artery, the superior epigastric artery. We have a branch coming from the external iliac artery, that is inferior epigastric artery. Then two branches coming from the femoral artery. One is superficial epigastric artery, and the other branch, it is the superficial circumflex humeral artery. So in total I have drawn like 1 2 3 4 5 branches that is supplying the anterior abdominal wall. Okay, इतना क्लियर है बेटा? फटाफट से एक थम्स अप दे दो that this picture is clear as of now. This picture is clear as of now. Chal. Surbeen says yes, doc. Yes, Tanupriya. Okay, perfect, perfect बेटा. अनुष्का, perfect, perfect. तो अगर मैं बोलूं, चल, let us now एक आर्टरी को उठा लेता हूं. सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी. It is a branch coming from femoral artery. Femoral artery, it is continuation of external iliac artery. External iliac artery coming from common iliac artery. Common iliac artery, abdominal branch, terminating branch. Abdominal aorta, we have thoracic aorta, continuation of thoracic aorta. Then thoracic aorta coming from the arch of aorta. Arch of aorta coming directly from the left ventricle. एक आर्टरी को पकड़ के पूरा का पूरा उसका पाथ ट्रेस कर लो, पिक्चर माइंड में क्लियर हो जाएगी. पिक्चर माइंड में क्लियर हो जाएगी.
ओके, पिक्चर माइंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें I just want to draw 2-3 more branches। तो इसमें बस आपको 2 ब्रांचेस और यहाँ पे ऐड करनी है बेटा। यू जस्ट हैव टू ऐड 2 more branches। दैट इज द ओके, दैट इज द 10th and 11th। We have the 10th and 11th। Okay, 10th and 11th posterior intercostal arteries, intercostal arteries। And if you will ask them me कि ये कहाँ से आ रही है, these are direct branches from the aorta। Okay, these are direct branches of the descending thyroid thoracic aorta। तो ये जो thoracic aorta है, these branches are coming directly from this thoracic aorta। Okay, so these are direct branches from thoracic aorta, thoracic aorta। These are direct branches from thoracic aorta, right? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतना क्लियर हो गया है तो फटाफट से बता दो। एक थम्स अप दे दो फटाफट से चैट बॉक्स में कि ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वाला पॉइंट समझ में आ गया है। तो अगर इफ यू वांट मी टू लाइक समराइज ओवर हियर बेटा, तो अगर मुझे समराइज करना है तो यस। हाँ, तो summarize करने के लिए if I just want to like show you the diagram over here which is drawn in the books, so let us like name। So we have the internal thoracic artery। Okay, so internal thoracic artery which is dividing into musculophrenic artery, superior epigastric artery, we have the inferior epigastric artery, superficial epigastric artery। Okay, it is coming from the external iliac artery, right? Sorry, it is coming from the this femoral artery, right? It is continuation of external iliac artery only। वो थोड़ा तोड़ के दिखाया हुआ है but it is continuation only below the inguinal ligament, right? So we have the posterior intercostal arteries, the 10th and 11th one I have already told you, right? They are direct branches from the abdominal aorta। Okay, so I hope this picture is clear, and one they have not drawn, that is the circumflex wala artery। That is also again you can draw, it's like mostly people don't write it, but yeah, you can like have a faith over there also, right? Okay, so from my point this particular diagram is over, and I have told you how it is like going, okay, how it is going guys। So you should know every time you should like reach the left ventricle, okay, trace that artery so that it becomes very easy for you people to know, get in like answer that। Okay, so I hope the picture is clear, the arterial supply is clear। एक final thumbs up दे दो so that I can start with the venous supply of the anterior abdominal wall। आर्टेरियल सप्लाई क्लियर हो गया है तो बेटा किसी को समझाना होता है तो इसी तरीके से समझाया करो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाओ आर्टरीज को उठा के और फिर दिखाओ कि हाउ इट इज गोइंग टू द एब्डोमिनल वॉल, राइट? तनुप्रिया, डिंपल, मनीष, एंजल मैथ्यूज, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। नाउ लेट अस डिस्कस द वीनस ड्रेनेज और द वीनस सप्लाई। तो अब वीनस सप्लाई के लिए सबसे पहला थंब रूल बता दो क्या होगा। सबसे पहला थंब रूल बता दो, जस्ट टेल मी वन थंब रूल कि व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद द लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, व्हेन आई एम स्टार्टिंग विद द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो अब वेन्स के लिए और द वीनस सप्लाई लिखा हुआ है बेटा, वीनस ड्रेनेज कर लेना है इसको ना। तो आई हैव जस्ट मेंशनड इट, तो आप इसको वीनस ड्रेनेज लिख लेना क्योंकि वेन्स तो ड्रेन करती हैं ब्लड, राइट? तो वेन्स एक्चुअली ड्रेन द ब्लड। ओके, so now guys see over here, we already know we have something which is called as the right atrium। Okay, we have the right atrium, and from the right atrium
हाँ, राइट एट्रियम रीच करना है। वेरी गुड रॉय द ओल्ड गेमर, कभी कभी तुम अच्छी बातें कर रहे हो। एंड वी हैव द राइट वेंट्रिकल, and from the right ventricle we have the pulmonary trunk. From the right ventricle we have this pulmonary trunk. Okay, pulmonary artery, और इस पे फिलहाल हम लोग को अभी डिटेल में नहीं जाना है. So you already know that we have two major veins in our body, two major veins in our body. Okay, the two major caval system. We have SVC, superior vena cava, and we have the inferior vena cava. We have the superior vena cava and we have an inferior vena cava, and they both are draining the blood into right atrium, and they both are draining the blood into the right atrium. तो चलो, अब आर्टरी वाला तो मैंने बताया था, वेन्स वाला तुम लोग बताओगे, ठीक है, वेन्स वाला तुम लोग बताओगे, ठीक है। नाउ बेटा, अब ध्यान से देखो, अगर if I just wanted to draw like this, okay, let us just draw the same diagram. You already know that we have this diaphragmatic wall. Okay, the diaphragm, we have this xiphoid process, and the two crusts of the diaphragm are there, right? The two crusts of the diaphragm are there, and below at the just at the midpoint we have this umbilicus. हमारा प्यारा umbilicus है ये, right? So now guys, now in the venous supply, beta, you have to remember 2 points over here. Okay, firstly, it is above the level of umbilicus, above the level of umbilicus. Venous drainage कैसे होता है मैंने बताया था ना, वाटर शेड एरिया है, और below the level of umbilicus, below the level of umbilicus. How the veins are draining the blood over here, how the veins are draining the blood over here. So we have 2 points over here कि above the level of umbilicus कैसे होता है और below the level of umbilicus क्या होता है. So in return I'll just draw a line just to mark that we have above the level of umbilicus and below the level of umbilicus. Okay, so remember guys, above the level of umbilicus we have two veins. Above the level of umbilicus we have two veins. Okay, now above the level of umbilicus, this is the vein, okay, that is draining the blood. Okay, this is the vein which is draining the blood. Can anyone tell me the name of the vein? Can anyone tell me the name of the vein? Yeah, this is the vein above the level of the umbilicus. Above the level of the umbilicus. Yes. And the name of the vein, beta, you have to remember it is the superficial. No, it is not superficial. Yeah, not inferior vena cava. Beta directly drain नहीं होता. Directly drain नहीं होता. It is the, yeah. I'm waiting for the answer. Yes, very good. Very good तनुप्रिया, थोड़ा सा दिमाग लगाना था. आर्टरी तो थी, आर्टरी तो थी ही. तो you should remember that it is the superior. Just a moment. Yes, the superior epigastric vein. So yeah, I'll just change the color so that you don't get confused. So we have this superior epigastric vein. Direction उल्टा बनाइएगा, आपको पता है they are draining the blood. We have the superior epigastric vein. Yeah, we have the superior epigastric vein. Apart from that, beta, remember these superior epigastric vein. Okay, the superior epigastric vein will drain the blood. Okay, now they will drain the blood into, now tell me, they will drain the blood into what?
they will drain the blood into which vein? They will drain the blood into, चलो फटाफट से आंसर बता दो. They will drain the blood into which vein, guys? Superior epigastric vein. They will drain the blood into, yes, internal. Yes, very good Tanupriya. It is the internal thoracic vein. तो इसको भी मैं ब्लैक से लिखूंगा. हाँ, we have this internal thoracic vein. Internal thoracic vein. अब मुझे ये बता दो, internal thoracic vein will drain the blood into internal thoracic brain. Yeah, internal. Yeah, tell me. हाँ, मुझे बताओ, internal thoracic brain will drain the blood into. चलो उसका आंसर दो. मीनवाइल आई एम ड्राइंग द अदर ब्रांच. मुझे इंफीरियर वेना कावा तक पहुंचाना है इसको. Subclavian. Subclavian. Any more answers? Beta, there is one more. Yeah, there is one more like vein, and that is the, yes. चलो अब ये थोड़ा सा तुम लोग होमवर्क करोगे. वी हैव वन मोर vein. I'm just drawing like in a very this manner, and this vein, it is called as the lateral thoracic vein. Okay, this is called as the lateral thoracic vein. Sorry, brain लिख रहा हूँ. It is called as the lateral thoracic vein. Okay, it is called as the lateral thoracic vein. And remember, guys, it will drain into, it will drain into, it will drain into. हाँ, इस वाले के लिए एजाइगस बोल रही हो तो ठीक है. नहीं, एजाइगस वाला इसके लिए नहीं है, इसके लिए एक्सिलरी वेन है. दिस इज एक्सिलरी वेन. दिस इज एक्सिलरी वेन. हाँ, एजाइगस. अच्छा, वो अनुष्का ने लिखा, उस वाले के लिए एजाइगस बोल रही हो क्या? ना ना ना, चलो वो भी अभी तुम खुद ही बताओगे. हम्म. मुझे पूरा ना एक रूट लिख के दे दो फटाफट से कि अब इंटरनल थोरेसिक वेन जो है, इट विल ड्रेन द ब्लड इनटू डैश, एंड मतलब दे विल कंबाइन, कि ब्रेकोसेफेलिक वेन्स है वो कंबाइन करेंगी, फिर वो आईवी बनेगा. मतलब पूरा एक लिख के बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में. और नीचे below the level of umbilicus, so above the level of umbilicus you have actually two veins, guys, right? We have the internal thoracic veins, right? Internal thoracic veins. Oh, sorry, we have this, yeah. Superior epigastric vein, which is draining the blood, and we have the lateral thoracic vein. Lateral thoracic vein. So lateral thoracic vein, it will drain the blood into axillary vein. It will drain the blood into axillary vein, and superior epigastric vein will drain the blood, and it will drain the blood into internal thoracic vein. Okay, internal thoracic vein. It is also the internal mammary vein या innominate vein का branch भी है ये, ठीक है. So I hope this is clear, everyone. Now below the level of umbilicus, guys, below the level of umbilicus, okay, now we again have one ligament over here. Okay, we have again one ligament over here, and that you already know. Okay, that is the inguinal ligament. This is the inguinal ligament.
Inguinal ligament, right? Inguinal ligament. And you already know, yes, internal thoracic will drain into SVC. Chal. The superficial Tanupriya says like this. Is Tanupriya right, guys? So yeah, we have this. Okay. Now from here, yes, below the level of the umbilicus, below the level of the umbilicus, it is the superficial epigastric veins. Okay. We have this superficial epigastric veins, and it will drain the blood into the great saphenous vein below the inguinal ligament. Great saphenous vein, it will drain the blood into the great saphenous vein. Okay. And yes, remember guys, we have inferior epigastric vein also. That is also like important, you should know. We have one important, okay, we have this inferior epigastric veins, epigastric vein that will drain the blood into external iliac vein, that will drain the blood into the external iliac vein. Okay, that will drain the blood into the external iliac vein. Actually the inferior epigastric vein, beta बीच में ना एक मसल होती है just around the umbilicus, that is the rectus sheath muscle. Rectus का मतलब क्या होता है? Straight sheath like muscle. तो ये जो blood है ना, it is draining the blood from the rectus sheath and typically going straight and draining the blood into the external iliac vein. Okay. Okay. And yes, हाँ ठीक है. Roy the old gamer, rectus abdominis, बिल्कुल ठीक है. We have another vein also. Okay, so yeah. We have another vein. I'll just draw it with another color so that you guys like not at all confused. We have another vein that is draining the blood into the great saphenous vein only. And the name of this vein, guys, remember the name of this vein. It is the circumflex vein. Okay, so it is the superficial. Okay, it is the superficial circumflex iliac veins. Superficial circumflex iliac veins. Yes, yes, Roy the old gamer, right. Superficial circumflex iliac veins. So ultimately below the level of the umbilicus, if you want me to write it over here, yes, you have actually three. Inferior epigastric vein, inferior epigastric vein. Okay, we have the second one, guys. Inferior epigastric vein ho gaya. Then we have superficial epigastric vein, superficial epigastric vein. तुम्हारा असली नाम क्या है? What is your real name, Roy the old gamer? Superficial epigastric vein, and the third one, that is the, yeah, inferior epigastric, superficial epigastric, and superficial circumflex iliac veins. सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक वेन्स. अब आप लोग का होमवर्क क्या है? आप लोग का होमवर्क ये है कि आप लोग घर पे ये सर्च करेंगे कि ग्रेट सेफिनस वेन, एक्सटर्नल इलियाक वेन, एक्सिलरी वेन, इंटरनल thoracic veins, how they are reaching the superior vena cava, inferior vena cava, and ultimately to the right atrium. You guys will do this homework and let me know via WhatsApp. Okay, if you found it, just let me know. It's a very simple homework that I have given you. You have to just connect the dots. Okay,
connect the dots to the right atrium. Okay, so I hope the venous drainage, the arterial supply, it is clear to everyone. फटाफट से एक thumbs up दे दो chat box में, जल्दी से एक thumbs up दे दो chat box में कि all this is clear to everyone. Tanupriya, Angel, Anushka, Surveen, very good, very good. Dimple D, very good, very good, very good बेटा. अभी गांधी, वेरी गुड. तो वीनस ड्रेनेज भी हो गया, आर्टेरियल, सब एक एक स्लाइड में करवाया बेटा मैंने, ओनली इन वन स्लाइड वन डायग्राम. एक दो डायग्राम से ज्यादा होगा मतलब, ठीक है, बट फिर कंसेप्ट भी देना होता है ना. तो आई एम लाइक गिविंग यू वन वन पेज वन वन थिंग. तो सब कुछ हम लोग वन वन पेज में ही कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि कंसाइज वे में सब कुछ हो गया. तो ये वीनस ड्रेनेज ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल दिखा रखा है डायग्राम में, जो ये बुक के अंदर दिया हुआ है. ओके ओके ओके. So yes, you have the superior epigastric veins, right? So lateral thoracic vein, obviously बात हो lateral side पे होंगे. Inferior epigastric vein, superficial epigastric vein, and superficial circumflex iliac veins. So all the veins are like given over here, right? So yes, yes, yes. Okay, perfect. The venous drainage is done. I've already drawn the diagram for the venous drainage of the interior abdominal wall, and now let us now start with the lymphatic drainage of the interior abdominal wall. Again, now, so here you have to like remember two things first. Yes. Okay, okay. So yes, Roy. Okay, Roy. Okay, Roy. Nice name by the way. चल ठीक है. फिलहाल हम रॉय तुम पे थोड़ा सा डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर कुछ नोट्स डाल देते हैं. ठीक है. So remember guys, start lymphatic drainage. It is divided into two parts. We'll draw the diagram also. No need to worry about that. So lymphatic drainage, we have the superficial lymphatics and the deep lymphatics. Superficial lymphatics and we have the deep lymphatics. Deep lymphatics, right? We have the superficial lymphatics and we have the deep lymphatics. Now, here a thumb rule, guys. Superficial lymphatics, they follow veins, and the deep lymphatics, they follow arteries. They follow arteries, right? The superficial lymphatics, they follow veins, and the deep lymphatics, they follow arteries, right? Now, there are 2 points, guys. Above umbilicus, again, above umbilicus, and we have below umbilicus. 2 landmarks over here, above umbilicus and below umbilicus. Okay. Now, above umbilicus, basically the superficial lymphatics, they drain the blood into axillary lymph nodes. Okay, they drain into the anterior, or we can say the pectoral group of lymph nodes. And pectoral group of lymph nodes, you guys already know that is the axillary lymph nodes. We have the axillary lymph nodes. We have the axillary lymph nodes. Right? We have the axillary group of lymph nodes. Okay, anterior axillary group of lymph nodes, anterior pectoral group of axillary lymph nodes. Okay, and below the level of umbilicus, they drain into superficial inguinal lymph nodes. We have superficial inguinal lymph nodes. We have superficial inguinal lymph nodes. Now, coming on to the deep lymphatics, guys. Okay, deep lymphatics, they follows the arteries, right? They follow the arteries. So they actually drain the lymph into the parasternal lymph nodes. Okay, okay. They drain the blood into the where is my cursor? Yeah, we have the parasternal lymph nodes. Parasternal lymph nodes. जब मैंने artery बोला बेटा, so it is actually following the internal thoracic artery. It is actually following the
internal thoracic artery. Above the level of umbilicus, parasternal lymph node, deep lymphatics. Okay, along the internal thoracic artery. If you just want to write it, why I have written arteries? It is along internal thoracic arteries. Internal thoracic artery. Okay, it is along the internal thoracic artery. Now, below the umbilicus, the deep lymphatics, basically they drain the blood into the external. Okay, I'll just write it above. It is the external iliac lymph nodes. Lymph nodes, and it is along the external iliac vessels, external iliac artery, external iliac artery. तो एक पिक्चर में ये क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है, एक पिक्चर में ये आप लोगों को क्लियर हो गया. Okay. Now, if I just want to draw it, guys, if you want me to draw this particular diagram as well. So you already know we have the umbilicus. We have the level of the umbilicus. So yes, above the level of the umbilicus and below the level of the umbilicus. Okay. So let us now take this point as the xiphoid process. Yes. And just not like So you already know that this, or lymphatics, I'll draw it with another color. I'll draw it with green. So yes, so we have this. Yes. So above the level of umbilicus, superficial lymph nodes, they are draining into, yes, axillary lymph nodes. Axillary lymph nodes, and below the level of umbilicus, they are draining into the superficial inguinal lymph nodes. Superficial inguinal lymph nodes. These are the superficial lymphatics. These are the superficial lymphatics. Now, if I just want to draw it like the deep ones, guys, the deep ones. So the deep ones, okay, above the level of the umbilicus. So above the level of the umbilicus, the deep ones, they are draining into the parasternal lymph nodes. And below the level of the umbilicus, they are draining into external iliac lymph nodes. External iliac lymph nodes, and I've already told you they are following the artery, that is the external iliac artery. So I hope this lymphatic drainage is also clear to everyone. फटाफट से एक थम्स अप दे दो जल्दी से. यस, जल्दी से एक थम्स अप दे दो कि लिम्फेटिक ड्रेनेज भी क्लियर हो गया है. लिम्फेटिक ड्रेनेज भी क्लियर हो गया है. यस, अनुष्का सेज ओके. यस सर, इट्स क्लियर. सुरवीन कौर, यस इट्स क्लियर. लिम्फेटिक ड्रेनेज हो गया, वीनस ड्रेनेज हो गया, हमारा आर्टीरियल सप्लाई बहुत अच्छे से समझ लिया, लेयर्स ऑफ द एब्डोमेन, और वी हैव डिस्कस्ड द रेमिनेंट्स, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट, मेकल्स डाइवर्टिकुलम, और थोड़ा सा हमने corresponding anatomical जो clinical anatomy वाला part था वो discuss कर लिया. So we have already discussed the lymphatic drainage. So yes, you have already seen this particular diagram which is given in the book as well. Yes, yes, Anushka, Surveen, Roy, Tanvi, Abhi, Tanu, Sai Krishna, Angel, Prisma, Garima, बाकी सभी क्लास अटेंड करते हो तो ए वाला फटाफट से बता दो. व्हाट इज ए गाइस? व्हिच लिम्फ नोड्स आर ए? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी से आंसर देते जाओ. विच लिम्फ नोड्स आर ए? मैंने तो लिख दिया है पूरा, अब तुम भी फटाफट डायग्राम देख के बताओ ए वाले कौन से लिम्फ नोड्स है. यस, ए वाला बता दो. बी इंग्वाइनल कैनाल में मिल रहा है तो वी हैव द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. ए, यस, द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. वेरी गुड रॉय, वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड. सी वाला तुम्हें पता है स्टर्नम के साथ है, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स हो गए, पैरास्टर्नल लिम्फ नोड्स हो गए. और डी वाला आप लोगों को पता है, या yes, the D one, it is the external iliac lymph nodes. External iliac lymph nodes. I hope this picture is also clear. Yes, yes, this picture is also clear. So book में जो pictures थे, relevant pictures थे, that also I'm taking into account and I'm just trying to make it more clear. Lymphatic drainage is clear. So write down the nerve supply of the anterior abdominal wall. Nerve supply of the anterior abdominal wall.
Okay, so write out that the nerve supply, it is from the lower, it is from the lower five intercostal, lower five intercostal nerves. Okay, lower five intercostal nerves. Okay, so yes, lower five intercostal nerves. Okay, so yes, now tell me guys, it is from T7 to T12. It is from T7 to T12. Now what is this like meant? What is T7? What is T7? What is T12? Now tell me what is T7? What is T12? T क्या है इसमें? जल्दी से बताइए. हाँ. Yes, very good, Anushka. It is the thoracic spinal nerves. Yes, thoracic spinal nerves. Dermatomes supply from thoracic spinal nerves. Very good. Very good, guys. Very, very good, guys. Very good. So we have the one supply, it is coming from here, T7 to T12, and the one are basically the ilio-hypogastric, the ilio-hypogastric and ilio-inguinal nerves. Ilio-inguinal nerves. Just near the inguinal ligament, you can see these two nerves. The ilio-hypogastric, right? In the picture, it's very much clear. Ilio-hypogastric and ilio-inguinal nerves. Okay, ilio-inguinal nerves from the level of L1. Okay, if you just want to mention from the level of L1, right? So yes, basically the ilio-hypogastric, ilio-inguinal, they emerge from the upper part of the lateral border of psoas major muscle, right? And run, they obliquely like go downwards, okay? And yes, they give muscular supply to internal oblique and transverse abdominis muscle. So they are supplying muscular supply. If you want to mention in your notes, yeah, muscular supply to internal oblique muscle and transverse abdominis muscle. Transverse abdominis muscle. Okay. And if you want to ask me what about the lower five, ये वाला जो है, they are actually supplying. So if you want to mention, they are supplying the external oblique, internal oblique, rectus abdominis. Okay. So they are anyhow the middle fibers are basically getting supply. The external fibers, I mean the external oblique, the internal oblique, the transverse abdominis, transverse abdominis, okay, and the rectus muscle also in the, and the rectus muscle also in the middle. The rectus muscle also in the middle. So yes, yes. I hope this is clear, everyone. I hope this is clear. The nerves, the lymphatic, venous, arterial, and the nerve supply. I think clear to everyone. Is it clear, beta? फटाफट एक thumbs up दे दो. Tanupriya, okay, yes sir. She says yes sir. All like four parts are clear for the interior abdominal wall. Just one slide, beta. Just one slide, one diagram. Like in that diagram only, I've mentioned everything. So you don't have to be like going to that much detail. जितना पढ़ा है, that is more than sufficient. More than sufficient. Now, coming on to the muscles of the anterior abdominal wall, coming on to the muscles of the anterior abdominal wall. So beta, we have in totality of five muscles. Okay, we have in totality of the five muscles that I have to discuss with you in detail, guys. So we have to, okay, we have the three anterolateral flat muscles that we already know. External abdominal muscle, in external internal abdominal oblique muscle, or you can just say external oblique muscle, internal oblique muscle, no problem. Abdominal word nahi bhi लगाओगे तो चलेगा. And we have the transverse abdominis muscle, transverse abdominis muscle. Apart from that, the two paramedian muscles,
which are like in the middle and just situated in the midline, around the midline only. We have the rectus muscle. Rectus का मतलब क्या होता है? Straight. Okay. Abdominis muscle, and we have pyramidalis muscle. And we have pyramidalis muscle. We have pyramidalis muscle. So yes, let us discuss each muscle. Pyramidalis is a very short muscle, guys. So we'll like discuss each muscle in detail. So there's no point to worry about that. Yeah. Now coming on to the external oblique muscle. Coming on to the external oblique muscle. Can anyone tell me what is the origin for the external oblique muscle? Yes, can anyone tell me what is the origin for the external oblique muscle? How many origins are there, guys? Yes. चलिए बताइए फटाफट से. I'm waiting for your answers. चल, अभी तो दिख रहे हैं, रिब्स तो दिख रही है, कम से कम रिब्स तो दिख रही हैं. तो सबसे पहले इसका हम लोग लिखेंगे ऑरिजिन. बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछा जाता है. मतलब अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है तो ये तो शॉर्ट नोट तो हमेशा आता ही है. तो फर्स्ट पॉइंट बेटा जो हम लोग हर मसल में डिस्कस करते हैं, दैट इज द ऑरिजिन. दैट इज द ऑरिजिन. ओके, दैट इज द ऑरिजिन. Okay guys, if you want to, okay, let me just make it short, or I can see the first origin. I can name it as the coastal origin. The coastal origin. Coastal origin सब बोल रहे हैं ribs से आ रही है sir. So remember, it is the outer surface of the lower 8 ribs. Lower 8 ribs. Okay. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Everyone is right. Lower 8 ribs. It is 5 to 12. Okay, 5 to 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so we have lower 8 ribs. Okay, now you can already see in the picture. Apart from that, guys, remember the insertion. Okay, now external surface of ribs. हाँ, outer surface भी लिख सकते हैं. Outer surface or the external surface of ribs. Okay. Now guys, there is one point that you have to remember. Key these 8 ribs, the first 4 and the lower 4. First 4, basically they interdigitate with one muscle, and that is called as serratus anterior muscle. हमारी ना first 8 ribs पर एक muscle present होती है, that is called as serratus anterior. Okay. Or that inserts into the medial border, the anterior aspect of the medial border of the scapula, serratus anterior, जिससे winging of scapula होता है. तो upper 4 से जो ये originate करी, मतलब 5, 6, 7, 8, तो इसके जो fibers है, they will crisscross और they will interdigitate with serratus anterior. और lower 4 जो है, the lower 4 जो है बेटा, they will crisscross or they will interdigitate with latissimus dorsi. They will interdigitate with latissimus dorsi. Okay, I hope this is clear. So if you want to mention, guys, that key upper 4 fibers, upper 4 like muscle fibers, you can say, so they interdigitate with, okay, serratus anterior muscle. Serratus anterior muscle, and the lower 4 basically they interdigitate with latissimus dorsi muscle. Latissimus dorsi muscle. Now beta, coming on to the insertion part. Insertion part. बेटा फाइबर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये जो मसल फाइबर्स है इनका डायरेक्शन क्या होगा? जल्दी से बता दो, थोड़ा सा दिमाग लगा के एक बार जल्दी से इन मसल फाइबर्स का डायरेक्शन भी बता दो. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीस मसल फाइबर्स? और इसमें 2 एक्सेप्शन है.
इस मसल फाइबर्स के डायरेक्शन में. So we have insertion in two forms, guys. Insertion in two forms. The first one, it is in the form of the fleshy fibers. Fleshy fibers. Anterior होगा, inferior होगा, ठीक है, वेरी गुड. डाउनवर्ड्स होगा, डाउनवर्ड तो हो जा ही रहा है ना बेटा, डाउन तो जा ही रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है. फॉरवर्ड जा रहा है, मीडियल जा रहा है, ठीक है. फॉरवर्ड जा रहा है, मीडियल जा रहा है, ठीक है. Except the uppermost fibers, basically they run horizontally forwards, okay, or lowermost vertical forwards, okay. Lowermost fibers से बेटा basically they run vertically like downwards, okay, और uppermost fibers जो है ना वो horizontally run करते हैं. तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि वो uppermost fibers are running horizontally और lowermost fibers है they are vertically like downwards, right? So the fleshy fibers. ओके, नाउ यू गाइस ऑलरेडी नो, यहाँ पे एक इंसर्शन पॉइंट देखने को मिल रहा है. और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, फटाफट से बताओ. ये चलती है, मैंने बेसिक्स में बताया था तुम लोगों को, जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है, जस्ट टेल मी कि विच स्ट्रक्चर इज दिस बेटा. जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है बेटा, फटाफट से बताओ विच स्ट्रक्चर इज दिस. इलिया क्रेस्ट. तो ये अब डायग्राम देख के ही पता चल रहा है, यस इलिया क्रेस्ट है, इलिया क्रेस्ट है, ठीक है. एंड इट इज द anterior half, anterior half of outer lip of iliac crest. iliac crest. तो ये जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब आप लोग को पता चलेगा. इट इज द एंटीरियर हाफ ऑफ द आउटर लिप ऑफ द iliac crest. तो iliac crest की भी दो लिप्स होती है, आउटर लिप, इनर लिप, और बीच में इंटरमीडिएट पार्ट भी होता है, ठीक है. तो आउटर लिप का जो आगे का हिस्सा है, द इंटीरियर पोर्शन का भी हाफ वाला, so over there it is like getting inserted. Anterior half of the outer lip of the iliac crest. Apart from that, guys, it is inserting in the form of fleshy fibers and also in the form of एपोन्यूरोसिस. अब मुझे फटाफट से बताओ एपोन्यूरोसिस क्या होता है. व्हाट इज एपोन्यूरोसिस, जल्दी से बताइए, व्हाट इज एपोन्यूरोसिस. तो एपोन्यूरोसिस से ध्यान रखना है बेटा, एक डायग्राम और है इसमें, मैंने नहीं डाला हुआ, ओके. एपोन्यूरोसिस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहला याद रखो, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मतलब सब. थिन शीथ, वेरी गुड फन मोड, मुझे ये सुनना था. इट इज थिन शीथ, it is not connecting in the like form of fleshy fibers, it is like a plain thin sheet and it is getting inserted into beta xiphoid process. अब xiphoid process किसका पार्ट है, sternum का, ये पता है तुम लोग को. दूसरा मैंने आपको बताया था, we have a straight line in between that is called as the linea alba. Okay, we have a straight line in the between that is the linea alba. We have pubic crest. प्यूबिक क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूं, और प्यूबिक तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज प्यूबिक, ठीक है. प्यूबिक क्रेस्ट, ओके, प्यूबिक क्रेस्ट, हाँ, प्यूबिक क्रेस्ट हो गया, यस. चलो, हाँ, प्यूबिक क्रेस्ट हो गया, यस. वी हैव प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल, you can see pubic crest, pubic tubercle, and anterior superior iliac spine, an anterior superior iliac spine, right? So yeah, over here actually it is getting folded to form the inguinal ligament. I'm not getting into that detail now because inguinal wala part to I will discuss it tomorrow. Inguinal wala part to I will discuss it tomorrow. So yes, I hope this is clear to everyone. The origin and insertion, फटाफट से एक thumbs up दे दो. The origin and insertion is clear to everyone. चल, ठीक, ठीक है, very good. अब
इसमें आपको याद रखना है, देखो मसल्स से रिलेटेड आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए: ऑरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन। ठीक है, नर्व सप्लाई और एक्शन। ठीक है, एक्शन में सारे एक साथ बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिलहाल यू जस्ट हैव टू मेंशन अबाउट द नर्व सप्लाई, the nerve supply, and you already know the nerve supply because I've already mentioned it. Anyone would like to answer? It is the lower 6 thoracic nerves. Lower 6 thoracic nerves. Yes, lower 6 thoracic nerves. Yes, connect the muscles to the bones. Yes. टेंडन हो गया ना फिर तो। एपोन्यूरोसिस का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज अ फ्लैट शीट ऑफ टेंडन, राइट? टेंडन का काम होता है बोन को मतलब मसल को बोन से अटैच करना। मसल्स आर नॉट डायरेक्टली अटैच, तो दे आर अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ ईदर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे ये कॉर्ड आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये टेंडन्स है बेटा, और ईदर दे आर फ्लैट रिबन लाइक, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एपोन्यूरोसिस बेटा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एपोन्यूरोसिस। ठीक है, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो नर्व सप्लाई लोअर 6 thoracic। नाउ एक्शन में सबके एक साथ बता दूंगा। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल क्लियर हो गया सब लोगों को? I hope the external oblique muscle is clear. So, yes, let us continue the internal oblique, transverse abdominis, rectus and pyramidalis tomorrow, guys. Let us continue tomorrow, and action I will be discussing it like ek saath. Okay? Chal. I hope you all enjoyed the lecture, guys. You all understood that what we discussed today. Yeah, it does not connect to bones like tendon. चलो ये भी एक स्टेटमेंट आ गया है। फिर बताओ। हाँ, it is not connecting to the bone. Basically, it's like a flat sheet of membrane where like the muscles are getting attached. So I hope the basic funda of today's lecture is clear to everyone, right? Crystal clear है? वो homework मत करना भूलना. I will ask you tomorrow for that homework also, right? हाँ, चलो. Yes, I will ask you that homework also. I have like discussed a lot of topics today, right? We have discussed the muscles. The muscles we have already started: the nerve supply, the lymphatic drainage, the venous drainage, the arterial supply with all diagrams, with the layers, with the ligaments, with the Meckel's diverticulum, and a little bit of applied anatomy of umbilicus. Okay, so yeah, yes, flat insertion of muscles. हाँ ठीक है, ठीक है, चल चल मिलते हैं फिर कल हम लोग। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कल क्लास में इवनिंग में ही ले लूँ, 5 o'clock। 5 o'clock मैं देख रहा हूँ बच्चे आ भी रहे हैं, थोड़ा सा तुम लोग भी सही से लोगे क्लास। मॉर्निंग में तो पता नहीं तुम लोग को क्या हो जाता है, बिल्कुल अच्छी अटेंडेंस नहीं हो पाती, सो के नहीं उठ पाते होगे तुम लोग। तो आई एम लाइक प्लानिंग की टेक द क्लास इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग कह रहा हूँ, इवनिंग। इवनिंग में सही रहता है थोड़ा सा ना, मतलब तुम लोग सही रिस्पॉन्स देते हो। चलो ठीक है फिर। चलो ठीक है, बाय।